Assalamu alaikum. I'm back with a new topic. In my last video, I have discussed about the different concepts: active transport, passive transport, transpiration, their factors affecting transpiration, their significance. We have discussed the structure of the roots. Now in this video, we are continuing the transport system in plants again, right? The subtopic is transport of water and minerals in stem. Now we are completely talking about the stem because in my last videos I have discussed about the structure of roots, how roots are absorbing the water and minerals from the soil through the process of the active transport or passive transport. We have discussed in detail. Now over here we are discussing the stem structure, stem tissues, but over here before starting this topic you have a concept of vascular bundles. So what are vascular bundles? These are having the transporting tissues, or you can say long tubes which support or provide the structure to the plant to give or transport the nutrients, minerals and food as well. In vascular system there are mainly two parts, xylem and phloem. Xylem is responsible to transport water and minerals from the roots to the rest part of the plant, while the phloem is responsible to transport the food from the leaves to the rest part of the plant. Okay, so these two are the vascular tissues, vascular bundles. So they are responsible for the transportation purpose in the plants, mainly found in the stem as well. Alright, so today we are only covering the topic xylem. What is xylem? Xylem is our long hollow tubes, you can say, or you can say they are having four different types: xylem vessels, xylem tracheids, fiber and parenchyma. These are the four types of the xylems which is mainly responsible to transport the water and minerals. Now in this session, again, I am not going to discuss the whole four types. Over here, I am just going to discuss only two types, that is the tracheids and the xylem vessels. What is tracheids? Any idea about the tracheids? The term says tracheids, that are tubular cells. Over here, I have drawn the diagram as well. The tracheid structure and the xylem vessels. What have you observed this in this video? Over here, they are having the pits. Again, tracheids, the term says tubular structure, the long tubular structures, while the vessels are not tubular, but you can say a hollow elongated cells, or you can say vessels, or you can say this part is also mainly known as element. So over here in the both parts it has pits. Now we are going to compare these two tissues, two bundles, to the two types of the vessels, that what is mainly the xylem vessels or the xylem tracheids. You can see over here the comparison about the xylem tracheids and xylem vessels. What is the major difference? It is having tubular cells. Tubular cell means that it has tubes. यानी इसका मतलब यहाँ क्या बात आ जाएगी, that यहाँ पर इनके पास tube structure होगा, elongated tubes होंगी, right? But in the xylem vessels they have elongated dad cells. Why I am saying dad cells? Because they are not responsible as such in the respiration or the photosynthesis. Okay, their cells are mainly having lignified structures. उनके पास बहुत lignified होता है. What is lignified? It is a fatty layer, or you can say a cellulose structure. Cellulose mainly जो है वो उस cell को particular क्या कर देता है, dad कर देता है. All right, major difference, tubular structure, tubular cells हैं इनके पास, right? इनके पास क्या है, elongated dad cells हैं. All right, the second difference, they have large pits. What are pits? क्या है pits? Pits are the hollow, or you can say pores. Okay, so these pits are actually allowing the cells, और उनकी different composition है. ठीक है, क्या composition है over here? In the tracheids they are found in smaller quantity. होते हैं large, होते हैं size में बड़े होते हैं pits, but यहाँ पर क्या है, कम quantity में होते हैं, smaller quantity में होते हैं. But what about the xylem vessels? They are found in the you can say more quantity, no doubt, but they are having the smaller size of the pits.
सो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, द ट्रैचेट्स एंड द वेसल्स दे हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द पिट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, दोबारा आई एम रिपीटिंग ओवर हियर दैट इन द दे हैव ट्रैचेट्स हैव द लार्ज पिट्स बट दे आर फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ये बात हमें पता ही है कि जब कोई चीज़ छोटी क्वांटिटी में होती है, कम मिकदार में होती है, सो दे आर मेनली फाउंड इन द लार्ज साइजेस. बट Xylem वेसल्स में पूरा उसका ऑपोजिट है. यहाँ पर स्मॉलर पिट्स होंगी, छोटी होंगी पिट्स, साइज में छोटे होंगी, बट दे हैव दी लार्जर क्वांटिटी, उनकी मिकदार ज़्यादा होगी. नाउ द थर्ड पॉइंट, दे आर लॉन्गर. अगेन दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स में होती हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्गर है. थिनर एंड स्टेपर. यू कैन सी दिस ओवर हियर इन द डायग्राम एज वेल. ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें इनके टेप्स जो हैं, जो इनकी एंड्स वो टेपर है, कनेक्टेड हैं दूसरे जो है ट्यूब से. सो देयर एंड्स आर टेपर, not pointed, but in the Xylem vessels they are wider as compared to the trachets. Cylindrical, यहाँ पर आप observe कर सकते हैं, they are in cylindrical structure and they join at plates. Totally just have a consider it over here that Xylem vessels में यहाँ पर अगर आपने observe किया हो, perforated plate का term लिखा हुआ है, and they are not as such in the tubular structure, they are elongated, लेकिन hollow है. ठीक है, and yes they have the pits. ठीक है, smaller size के pits हैं but larger quantity में हैं. and this perforated plate allow the efficient way, we are going to discuss in another point as well, जो हमारा last point भी है यहाँ पर कि क्यों हम बोल रहे हैं efficient है. but यहाँ पर point simply ये है कि their ends are not taper. Okay, they are ending with the Xylem vessels, you can say perforated plates. ठीक है, तो एंडिंग्स की हम बात कर चुके हैं. यहाँ पर हमने पिट्स की बात कर ली है और उनके सेल्स की बात कर ली है कि सेल्स से उनकी जो कॉम्पोजिशन हुई हुई है. नाउ द फोर्थ पॉइंट, दे यस थिन सेल वॉल वाइल द थिक सेल वॉल. ठीक है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट है किसमें, हम कह रहे हैं ट्रैचेट्स के अंदर, जबकि Xylem vessels में क्या है, दे आर हैविंग थिक सेल वॉल. उनकी जो सेल वॉल है वो थिकर है, सेल्यूलोज उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. नाउ द ट्रैचेट्स मोर लिग्निफाइड. मैंने कहा था कि लिग्निफाइड होता है, जिनके जो सेल वॉल होते हैं वो लिग्निन से बने हुए होते हैं. लिग्निन इज अ फैटी लेयर, राइट. तो उनके पास जो है लिग्निफाइड ज़्यादा है, लिग्निन ज़्यादा प्रेजेंट है. सो हैव नैरो ल्यूमेन. व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमेन इज दिस इज द ल्यूमेन. कोई भी चीज का हम कहते हैं हॉलो पार्ट, दिस इज द ल्यूमेन. अ स्पेस, अ हॉलो पार्ट दैट अलाउ द न्यूट्रिएंट्स टू पास ऑन दैट स्पेस. ठीक है, तो हम ल्यूमेन किसी स्पेस को कह रहे हैं, हॉलो पार्ट को कह रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज द ल्यूमेन. इसके साइजेस डिफरेंट कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, इसको भी हम ल्यूमेन ही कहेंगे. सो साइजेस कैन बी डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पार्ट. ठीक है, अब वेसल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ल्यूमेन का साइज तो बहुत बड़ा है. ठीक है, लेकिन जब हम ट्रैचेट्स की बात करें तो इनके साइज इनका जो ल्यूमेन इतना ज़्यादा क्या है वो नहीं है. ल्यूमेन बहुत नैरो है. सो मोर लिग्निफाइड, सो हैव नैरो ल्यूमेन. बट यहाँ पर क्या है, लेस लिग्निफाइड है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, वाइडर ल्यूमेन होगा. यहाँ पर जो है वो नैरो ल्यूमेन नहीं होगा. तभी हम कह रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर में नजर भी आ रहा है कि इन द Xylem vessels दे हैव वाइडर ल्यूमेन एज कंपेयर टू द ट्रैचेट्स. और इसी से कनेक्टेड एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट एफिशिएंट एज नॉट परफोरेटेड. ठीक है, जब हमने यहाँ बात कर ली कि लिग्निफाइड है तो नैरो ल्यूमेन है. जब नैरो ल्यूमेन है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो रही है, इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है. लेकिन एक और रीजन ये है कि परफोरेटेड प्लेट्स प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है. बट व्हेन यू आर सीइंग अबाउट अ Xylem vessels, सो यस दे हैव द परफोरेटेड प्लेट्स. तो परफोरेटेड प्लेट्स क्या कर रही हैं, इट विल नॉट अलाउ टू द बैक फ्लो. It just prevent the backflow, you can say, and as well यहाँ पर easily water pass हो रहा है because we are talking about the xylem. So xylem is mainly responsible for transport the water and minerals, right? So as compared to tracheids, vessels have a very important function in the transportation of the water in plants. ओके, सो ट्रैचेट्स का हम दोबारा एक समराइज कर देते हैं, ट्रैचेट्स एंड वेसल्स का. ठीक है, हमने डिस्कस किया Xylem की 4 टाइप्स हैं, Xylem vessels, ट्रैचेट्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा. और हमने यहाँ पर सिर्फ 2 को डिस्कस किया बिकॉज Xylem vessels और ट्रैचेट्स का कुछ समहाउ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है.
ट्रैचेट्स को हमने डिस्कस किया. ट्रैचेट्स की कंपैरिजन इंपॉर्टेंस जो है जाइलम वेसल थोड़ी कम है. रीजन क्या है? बिकॉज दे हैविंग द ट्यूबुलर सेल्स, उनके पास नैरो ल्यूमेन होता है, इनके पास थिन सेल वॉल होती है, प्लस उनके पास इनके एंडर टेप्स हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स उनके पास परफोरेटेड प्लेट्स प्रेजेंट नहीं है, राइट? लेकिन जाइलम वेसल्स बहुत एफिशिएंटली अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे से काम करता है. व्हाट्स द रीजन इज दैट दे हैव इलोंगेटेड डेड सेल्स, स्मॉल पिट्स प्रेजेंट है, वाइडर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनकी सेल वॉल थिक है इसके एज कंपेयर टू दैट दी ट्रैचेट्स के. लिग्निफाइड लेस है एज कंपेयर टू ट्रैचेट्स. अगेन वहाँ ज़्यादा लिग्निफाइड था तो नैरो ल्यूमेन था, बट यहाँ पर क्या है? वाइडर ल्यूमेन है. ओके तो जितना ल्यूमेन बड़ा होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन में उनको आसानी हो जाएगी. एंड येस दे आर एफिशिएंट एज कंपेयर टू दी ट्रैचेट्स बिकॉज यहाँ पर परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम. इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लोएम स्ट्रक्चर. सो कीप इन टच. अल्लाह हाफिज़.